أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. अबू अमामा अल-बाहली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जन्नत के एक जानिब एक मकान की ज़मानत देता हूँ उस शख्स के लिए जो कि रया और शोहरत को तर्क करे, ख्वाह वो हक पर ही क्यों ना हो, और वसत जन्नत में उस शख्स के लिए मकान की ज़मानत देता हूँ जो झूठ को छोड़े, ख्वाह मजाक ही क्यों ना हो, और जन्नत के आला हिस्से में उस शख्स के लिए मकान की ज़मानत देता हूँ जो अखलाक में सबसे अच्छा है। Hazrat Abu Umama al-Bahili, may Allah be pleased with him, narrated that the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, I guarantee a house in paradise for the one who gives up arguing, even if he is in the right. And I guarantee a home in the middle of paradise for the one who abandons lying, even for the sake of fun. And I guarantee a house in the highest part of paradise for the one who is of a good moral character. Remember that if you bring yourself to obey the commandments of Allah Almighty and endeavor to support His chosen religion, God will remove all the obstacles in your way and you will be successful. Do you not observe how a farmer will uproot weeds from the field so that healthy plants can flourish, and how he adorns his field with beautiful and fruitful trees, and safeguards and protects them from everything that could cause them harm? However, owners do not care if cattle eat away at such trees and plants which do not bear fruit, and which begin to rot and dry, or if a lumberjack cuts them down and throws the wood of such trees into a furnace. In the same manner,
You too ought to remember that if you are deemed among the truthful in the sight of Allah Almighty, no one who opposes you can cause you grief. If, however, you do not set aright your state of affairs, and if you do not make a firm covenant of obedience with Allah the Exalted, then God has no care for such people. Thousands of sheep and goats are slaughtered daily, and no one is moved by mercy to prevent this. Yet, if even a single human being is killed, a long string of questions will follow. Therefore, if you let yourselves become useless and carefree in the likeness of animals, you shall meet the same fate. You ought to join with those who are loved by God, so that no disease or calamity can muster the courage to lay its hands upon you. For nothing can transpire on earth except with the permission of Allah Almighty. Rid yourselves of all mutual conflict, aggression, and enmity. Now is the time for you to set aside trivial matters and engage yourselves in important and magnificent work. The people will oppose you, and the members of the Anjuman will be displeased with you, but you ought to advise them gently and not act vehemently towards them. This is the advice that I bequeath to you. Always remember my counsel, in the form of a testament, that you must never act angrily or harshly, but rather you must advise everyone gently, softly, and courteously. Clearly explain to the members of the Anjuman that such a memorial is actually harmful to the religion of Islam. The reason we have opposed their memorial is because it is injurious to the religion. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने हिदायत की तरफ बुलाया तो उसके लिए उतना ही सवाब है जैसा कि उस शख्स के लिए जो कि इस नेकी को बजा लाता है, और उसके सवाब में से कुछ कमी नहीं की जाएगी। और जिस शख्स ने गुमराही की तरफ बुलाया तो उसके लिए उतना ही गुनाह है जितना गुनाह के इर्तिकाब करने वाले पर होगा, उसके गुनाहों में से भी कुछ कमी नहीं की जाएगी। Hazrat Abu Huraira, may Allah be pleased with him, narrated that the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, "If anyone summons another to follow right guidance, his reward will be equivalent to that of the people who follow him, without their reward being diminished in any respect on that account. And if anyone summons others to follow error, the sin of which sins being diminished in any respect on that account." और मैं इस वक्त अपनी जमात को जो मुझे मसीह मऊद मानती है ख़ास तौर पर समझाता हूँ कि वो हमेशा इन नापाक आदतों से परहेज़ करें। मुझे खुदा ने जो मसीह मऊद करके भेजा है और हज़रत मसीह इब्न मरियम का जामा मुझे पहना दिया है, इसलिए मैं नसीहत करता हूँ कि शर से परहेज़ करो और नूए इंसान के साथ हक़ हमदर्दी बजा लाओ। अपने दिल को बुग़्ज़ों और कीनों से पाक करो कि इस आदत से तुम फरिश्तों की तरह हो जाओगे। क्या ही गंदा और नापाक वो मज़हब है जिसमें इंसान की हमदर्दी नहीं, और क्या ही नापाक वो राह है जो नफसानी बुग़्ज़ के कांटों से भरा है। सो तुम जो मेरे साथ हो ऐसे मत हो। तुम सोचो कि मज़हब से हासिल क्या है? क्या यही कि हर वक्त मर्दम आज़ारी तुम्हारा शिवा हो? नहीं, बल्कि मज़हब उस ज़िंदगी के हासिल करने के लिए है जो खुदा में है, और वो ज़िंदगी ना किसी को हासिल हुई और ना आइंदा होगी, बजुज़ इसके कि खुदाई सिफ़ात इंसान के अंदर दाखिल हो जाएं। खुदा के लिए सब पर रहम करो ता आसमान से तुम पर रहम हो। आओ मैं तुम्हें एक ऐसी राह सिखाता हूँ
جس سے تمہارا نور تمام نوروں پر غالب رہے، اور وہ یہ ہے کہ تم تمام سفلی کینوں اور حسدوں کو چھوڑ دو اور ہمدرد نوع انسان ہو جاؤ اور خدا میں کھوئے جاؤ اور اس کے ساتھ اعلیٰ درجے کی صفائی حاصل کرو، اور یہی وہ طریق ہے جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں، مگر یہ ایک دن کا کام نہیں۔ ترقی کرو، ترقی کرو۔